रही है, तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष? You speak. Should I leave? Should I leave? Then you speak. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. Subject में नहीं आपका lobby. आपका lobby subject में नहीं है. ये विषय कर रहे हैं. The discussion. One second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने नहीं दीजिए. एक मिनट एक मिनट बैठिए. एक मिनट बैठिए. माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं. सदन की गरिमा को बनाए रखें. आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है. Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture is... What is it? मानिए प्लीज मानिए. The third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it
that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner. What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, set up election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट. आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा. ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें. आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक, नहीं जैसे सदन नहीं चलेगा. नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा. आप ले रहिए, आप ले रहिए. नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए. नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है. नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा. अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए. सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर रहे, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है. तरीका इधर पे नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से ही बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे. Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that,
There is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now, let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we are not just the biggest democracy, we are the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people.
They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There's no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या बोला भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। खोदा पहाड़ निकली चुईया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति महोदय। ये संविधान की बात करती हुई नजर आई, और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है सभापति महोदय। आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और ये केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार?
सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल, एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं, मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी और एसआईआर, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी के लिए ही लेके आया हूं। ये 1980 का, अध्यक्ष महोदय, ये 1980 का कांग्रेस का, ये क्या करना चाहते हैं ये देश को जानने वाला विषय है सर। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 1980 का जवाब है पी शिवशंकर का, कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की, पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, कारातरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या आप फिर से वही वापस आना चाहते हैं? ये मैं आपको सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके, डीएमके से लेकर टीएमसी तक वायएसआर सीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने, ये ईवीएम कौन लेकर आए? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की, और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे। और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। इतना ही नहीं हुआ था सर, इतना ही नहीं किया इन लोगों ने,
यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा मेहम का चुनाव काउंटरमांड हो गया था। पटना का चुनाव पूरा आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया था। और इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है, नहीं ईवीएम होगा तो ये चुनाव पूरे रिगिंग हो गए। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल.के. आडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज काउंटिंग करो, क्योंकि आप लोग जब चुनाव के रोल को घुमाते हो तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है। तो क्या तर्क दिए गए आपको पता है सर? यह तर्क यह दिया गया कि बूथ वाइज यदि काउंटिंग करने लगेंगे तो जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं वो वोटरों को मारेंगे। इसीलिए आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वो होती थी जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रिगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती सर। गिरे ठीक है ना, पेट बुढ़िया। चलो बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ये लोग, मैं आपको बताऊं कि इतिहास के पन्नों को तोड़ना मरोड़ना यदि कोई सीखे तो उसको कांग्रेस से सीख जरूर लेनी चाहिए सर। चलो बाहर ले लेना, बाहर पैर मुड़ा कोई दिक्कत। यदि किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना और मरोड़ना है तो उसको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उस उम्र को 18 साल कर दिया। सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो ये 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है। 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि ये रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट। मैं इसको प्लेस कर दूंगा सर। ये हमने किया। आपने 16 साल, चूंकि हमको मौका नहीं मिला शासन में आने का, और 2 साल जो हम मौके में थे 77 से लेकर 80 तक, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप उसको 16 साल बाद इंप्लीमेंट कर पाए। आज उसके लिए आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने काम कर लिया। आज एसआईआर की जो बात हो रही है और जो महाराष्ट्र और इसकी बात हो रही, सर आपको मैं बताऊं कि मैं बिहार का और महाराष्ट्र का रिजल्ट लेकर आया सर। एसआईआर कहां हुआ, वोट कहां बढ़े कहां घटे और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिली। बिहार का सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है वाल्मीकि नगर, डॉक्टर संजय जायसवाल बैठे हुए हैं, उनके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वोट का डिलीशन हुआ 2311, वहां से 1675 वोट से जो बलेरो में बैठने लायक जितनी सीटें मिली, 6 सीट जो कांग्रेस को मिली, उसमें से 1675 वोट से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट है चनपटिया, एसआईआर से डिलीशन हुआ 1033, इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोट से जीती। तीसरा सीट है ढाका, एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती। और उसमें 298 लोग ऐसे हैं सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। चौथी सीट है फारबिसगंज, एसआईआर का डिलीशन हुआ 1400, 221 वोट से कांग्रेस जीती। पांचवी सीट है बलरामपुर, जिसमें 1468 डिलीशन हुआ और हम जीते एलजेपी रामविलास 389 वोट से। इसके बाद सीट है रामगढ़, 1197 वोट से डिलीशन हुआ, 30 वोट से बहुजन समाज पार्टी जीती। और इसके बाद सीट है जहानाबाद, जहां 1832 वोट एसआईआर से डिलीशन हुआ, 793 वोट से आरजेडी जीती। हम हारने वाले हैं सर,
लेकिन हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे मां पिताजी का नाम कटा, मेरे मां पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे मां पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। 70 साल का एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजिमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजिमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा? यदि तजिमुल, मैं नाम बता रहा हूं, मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। तीसरा सर, महाराष्ट्र की बात है सर। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र अहवाट जीते 96,000 वोट। भिवंडी वोट बढ़ा 37,000। 52,000 वोट से रईस कसाम शेख चुनाव जीते सर। खेड अलांदी 23,000 वोट बढ़ा, 51,000 वोट से बाबाजी रामचंद्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास 100 जगह की लिस्ट है। यदि कहेंगे तो मैं प्लेस कर दूंगा, से इतना समय में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि वोट इंक्रीज हुआ तो फायदा महायुति को हुआ। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। इसके बाद भी आपको जो है एसआईआर खराब लग रहा है। एसआईआर क्यों ये विरोध कर रहे हैं सर, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें आईटीवी और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। I don't see any physical status here. They are not showing anything and they are not telling anything about the flight. The marriage is on, but the bride has to reach there. The flight is also cancelled and today one of my friend's daughter marriage is there. अच्छी नहीं है ना, किसी पब्लिक को परेशान करना है, कुछ तो अपना करना चाहिए, कुछ रास्ता बनाना चाहिए। वेरी रिडिकुलस, ये बहुत गलत हो रहा है।
and welcome. You're watching Newsx and I'm Shivani Singh. In a bombshell exclusive, Newsx reveals the staggering economic toll of the Indigo flight mayhem that's crippled India's skies. And it's a man-made disaster of epic proportions. Our back-of-the-envelope math lays it bare. A whopping rupees 10,000 crore lost in just 8 chaotic days of cancellations and delays, hammering everything from standard weddings to skyrocketing fares and shattered business plans. With over 3,400 flights scrapped since December the 2nd, Indigo, the airline that flies 2 out of every 3 passengers in India, has unleashed a ripple effect that's bleeding the economy dry. From lost tourism revenue to supply chain snarls and irreplaceable productivity hits. Let's in fact take a look at the full breakdown of this back-of-the-envelope math. We will take you through this math that we have tried to ascertain what the economic hit will actually be. Remember, viewers, that this is back-of-the-envelope calculations. These in no way reflect what is there on the ground. Now, when we look at the economic hit, the part 1 is the immediate hit, which is flight ticket refund. So, if we look at the total flights cancelled, there were 4,500 flights cancelled. And average passengers per flight, if we take it to be around 180, and the average fare, if we take it to be around 5,500 rupees, the total passengers will be 8,10,000, and the total loss, look at that big figure, rupees 455.5 crore. So this is part 1, the flight ticket refund, and this is the loss for that, 4,555. The secondary hit, this is the second part of the calculations that we've got for you. If we look at the total flights, again cancelled 4,500, average passengers per flight 180, and the total compensation, if we look at, we are only keeping it at 10,000 rupees. So the total passengers, as we've stated to you, 8,10,000. The total compensation comes across to 810 crore. That's a big number that we are looking at, that this is the secondary hit that comes in play. Now, when we look at the third and the most important part, the per person loss. So, when we look at those similar figures, 4,500 flights cancelled, 180 passengers per flight, and per person economic damage, we're taking a very reasonable amount of 1 lakh. So, when we look at the total passengers of 8,10,000, the total per person lakh goes on to 8,100 crores. Look at that whopping figure, viewers, 8,100 crores for that third hit. So the total approximate hit, this is the big number that we are getting for you. This is the back of the envelope math that we've done for you. The immediate hit, we pointed out to you, 456 crore. The secondary hit, 810 crore of the refunds, and the per person average loss of 8,100 crore. The total outstanding bill for Indigo stands at 9,366 crores. That is approximately 10,000 crore loss. The economic hit is massive for Indigo, viewers, and that's what we are going to do today. We are bringing down these numbers for you. We are breaking it down. This is a back of the envelope math that we've brought for you. But here's the burning question to one that nobody is actually answering. Who's quantifying the full damage to our GDP? And who will pay back for India for this avoidable catastrophe born of poor planning, crew shortages, and a blatant disregard for new pilot rest rules? I open up this discussion, and joining us on this broadcast is Dr. Ajay Dua, former Commerce Secretary, Mitali Nikore, economist,
And Surjit Panesar, aviation expert. Also joining us will be Gautam Mukherjee, senior journalist. I thank you all for joining us on this broadcast to discuss the numbers which actually matter for the country. If I can go across to Dr. Dua first. Dr. Dua, what do you make of these numbers that are coming? All right, we will in fact try to reconnect over here. If I can go across to Mithali Nikore. Mithali, what do you make of this back of the envelope calculations that we have brought for the nation? 10,000 crore economic hit. Who is going to pay? Thanks a lot for bringing me into this conversation. I was personally, spared from this crisis, even though I travel a lot. I saw a lot of people just 2 days ago at the Ahmedabad airport who were just crying at the airport, because they were missing their business. There were meetings that were actually, which could have happened, deals which could have happened. So, today when you're presenting your calculations, what you are presenting is pretty much the direct economic cost, one is the direct financial cost, that's the nearly 2,000 crores which you laid out. Then the economic cost of 8,000 crores, which makes complete sense. But on top of that, I'll say there is also the indirect cost, deals which could have happened but didn't happen. Wedding celebrations that could have happened but got cancelled. There were so many, people who lost their lives and, who had to be hospitalized. And there is the cost of that as well. So when we start to, actually break down the math and we start to put a number to these things, the numbers will be actually much higher than 10,000 crores. And really the question today for the Indian consumer and for any of us who has faced an inconvenience because of this crisis is who is going to pay. And at the end of the day, that legal blame has to lie on the airline because the airline had sufficient notice in advance that they should have planned for it, but they didn't. And the open letters which have been circulating from the airline staff clearly tell us that this is not a problem that manifested just with this regulation coming into force, but was actually stewing for years on end. So, the costing which you have talked about, it's absolutely logical because there is the direct cost on the people who were who were flying. But imagine the number of flights that people didn't take, converted them into online meetings or said that, let me put this trip off because right now is not the good time to fly. That also costs the economy because, this is the peak tourist season and a lot of tourists were impacted as well. So that also has an economically adverse impact. Absolutely. Surjit Panesar, if I can come across to you with this question. The economic impact is huge, sir, and Indigo keeps blaming, this is a man-made disaster because they are saying that we didn't have staff to take care, there were rostering changes, all other airlines did it, Indigo failed to do so, and now we are left with this humongous bill in front of us. Mr. Panesar, if you can hear us. All right, we'll... At the outset, let me say one thing. He has issued a strict order to the airline to pay the return tickets and all that, which the airline had to give it, even otherwise they would have been a case of criminal cheating and forgery against the innocent passenger. But this is a well-planned strategy planned by the Indigo airline to harass the public, and by harassing public, we will come back to you. There's some issue with the connection over there. I will rope in Gautam Mukherjee into this discussion. Mr. Mukherjee, how do you look at this economic loss that the country is facing because Indigo decided not to do anything about those rules that came into place, and now we are left with such a huge bill in front of us with such a loss to our economy? It's running our economy dry, sir. It's a big airline. It is profitable. It has a 60% market share. So since this is a totally deliberate and avoidable occurrence that has inconvenienced thousands of people all over the country, a big fine
is in order. Two, some people in the DGCA as well as in Indigo need to be punished, perhaps be sent off. Three, and this has been mentioned by the minister in Parliament, that possibly some percentage of their air, I don't know what they exactly call it, but the permissions to fly to different places, they're talking of cutting back at least 5% to start with. Now, all of this will go towards adjusting some of the costs onto the backs of the people responsible in Indigo, and the negligence that has come about. It's no good DGCA saying, you see, the others have complied, these people haven't complied. They were warned, they knew about it, they did nothing about it, so they are also culpable. So it's a combination of the DGCA, possibly some of the higher ministry officials, maybe DGCA reported it to the ministry and they did nothing. So all of this needs to be investigated, and I'm sure the magisterial inquiry may turn up a lot of this kind of thing. And then you need a shakeup, and you certainly need to punish Indigo, not just for this incident, but to prevent them from doing this kind of thing in the future by reducing their influence and scope of works. Absolutely. Mithali Nukore, if I can come back to you, when we are looking at specifics, this is obviously a back of the envelope calculation, but if you look at the specifics per person loss, Mithali, it's humongous, and you cannot quantify that. From missed business deals to lost wages to deferred travel, accommodation costs, you cannot quantify that, but we've tried to get a glimpse into, that loss, 8,100 crore just per person loss, Mithali. No, absolutely. And, you're absolutely right to put a number to this because, often we just say, okay, this has been a major loss for the country or for the airline, for the sector. But this is actually a major loss, which is also going to have an impact on insurance companies, because a lot of people who would be traveling would be filing claims in front of their travel insurance companies that, look, our flight was delayed because, say, for example, you are a traveler, you're going from Mumbai to Delhi, and then from Delhi you're catching another international flight, and you missed your international connection because of this mayhem and chaos. Then you will be writing to an international travel insurance provider, and they will be required to give you a compensation. So, the loss and the way this loss occurs, it transcends beyond just Indigo. It actually has shaken up the entire aviation sector. It has introduced and exposed the risks, of the dependence on this one airline for the entire sector. And here, I really feel that there is a responsibility of the regulator, that is DGCA, as well as the Airports Authority of India, because both of these, authorities have to ensure that the permissions and, permits which are issued to other airlines are expedited. So what happens is, a lot of airlines, if they even want to expand their routes, it can take them months to get even one route approved. And, to have a sort of an expedited approval for other airlines is now critical. Plus, the government really needs to come in and say, what, if we have brought this Udan scheme, where we have brought in, affordable sort of route pricing, where we are activating these new airports, can we also work with the smaller airlines that are serving these Udan airports and help them expand to the major routes as well? And I think with Akasa, the government did that. The government actually supported Akasa with some expedited approvals. So it is very critical that, the regulator and the ministry support in the economic evolution of the sector, and also support some foreign airline, foreign participation and investment, because there has to be competition in the industry.
Absolutely. In fact, Mr. Panesar, if you are back on the line with us and if you can hear us, when you are looking at this man-made disaster, this was not weather, this was not tech problems, this was a man-made disaster. Indigo knew what it was doing. It was bleeding the economy, and that 1 week has proved. We have some numbers that we have approximately calculated. So do you think Indigo should be blamed for entire thing? Should this be consolidated and Indigo should be asked to pay the penalties directly and indirectly? Well, this is a very well pre-planned strategy by the Indigo airline manager to blackmail DGCA and the ministry through the passengers by harassing and frustrating passengers. They should be punished. I am happy at least the Mantri has given strict order to pay the money back. That they had to pay, otherwise it is a criminal case. But what about the frustration and the humiliation caused to the passengers who come from abroad and they want to go to small cities, they are at the airport without food, without water, without accommodation? It's a matter of shame. They have brought the shame to the country. We are supposed to be one of the best democratic countries in the world, and today they have brought the aviation as a mockery of the aviation. They should be punished, and I think this is a lottery for the other airline that they've increased the prices exorbitant because of these people. Maybe they have a connivance. Now 4,000 rupees ticket is cost to 40,000, to Calcutta it is 1 lakh. It is cheaper, going to London is cheaper than going to Bombay, this thing. We request the Honorable Minister also to bring the regulatory agency to fix the fares for all the routes. Like other country in America, there is a regulatory body, they control the fares. You cannot increase it whatever you like it. You may be private airline, but the law of the land has to be followed. We will only request humbly to the Honorable Minister to place a bar on charging very heavy prices. They should return the extra money they have taken it from the passengers for cheating and forgery. What best they can do it to we people? I think it's a high time the ministry should rise to the occasion and should file a criminal case against the airline or cancel their license for 15 days. They will come on their knees. They have imported foreign people from other countries to run the airline. Where are those people? They just got 6 days ago from a slumber sleep. They said we are short of the crew. They knew only 6 days ago they short of crew. What planning they have done earlier? Just to harass the passengers, to humiliate the passengers. They are children, they are young, old ladies, young people, couples. They have to go for their own functions and examination, interview, court cases. They put them into such a harassment. Why should they not be fined? I think the Honorable Court should take a sumo action against the Sir, I'll come back airline. to you. In fact, also joining us on this discussion is Professor Aman Agarwal, Director, Indian Institute of Finance. Sir, thank you for joining us. When we are looking at the economic impact of this short-term crisis that happened because of Indigo, because of those man-made failures that Indigo actually brought into place, we are looking at rupees 10,000 crore. This is back of the envelope calculation, sir. We are just trying to put a number to that economic loss. Who is going to pay back, sir? Our country and our economy is bleeding dry because of one airline. Professor Agarwal, if you can hear us. Professor Agarwal, if you can hear us now, we are talking about the financial impacts of this entire man-made crisis. What do you make of it? You see, there will be losses to the organizations as well as to the government, but given the fact that the fares have risen extremely high because of the disturbance, neither the government nor those airlines which are raising the prices will have an impact. However, this will create a disturbance in terms of the employee base and their, concerns on terms of health, in terms of schedules. Already, some of our own students also who have been working in the airlines industry have, raised this issue of creating disturbances. Number of flights which they were supposed to attend have increased. As a result, they are facing difficulties. So there will be dissatisfaction amongst the employee base.
However, as you would have read in various newspapers also, the fare for these flights have gone up tremendously high. So typically there would be some recoup in terms of revenue loss to the airlines, but that is not a long-term solution. This always happens wherever a disruption happens. In the overall, I would not say there will be a much impact on the GDP growth rate, but certainly the companies where the disruptions are there, where the flights are getting cancelled, or either because of the DGCA requirement or other requirements, there would be financial losses. And if this continues for a period of about 15 days to 20 days, there could be major financial losses to that company. So, but when you look at the personal financial loss as well, we cannot put a number to it. We've tried to calculate. So many people have lost business deals, sir. So many missed, deals that they were trying to form with new companies. How do we accommodate that, sir? Because everybody is left No, I bleeding. appreciate the concern. First of all, business deals, some of them need physical presence, which is a mandatory requirement, and that cannot be fulfilled by this kind of a disruption, for sure. However, business deals which are in terms of agreements, in terms of moving forward in a relationship, all those can be done like we are connecting over Zoom for this interview. And most of the discussions, even in the past, used to happen over the telephone. Contracts used to be finalized over the telephone. So it is never that traditionally did not happen. One could always move forward with collaborations or agreements going forward, and one does not need to be physically present for that. Today, many a times we sign agreements and send them across through courier, and those are signed. We have signed agreements with various universities in the United States and other countries, wherein we have signed the agreements and we have sent them over courier, and then they sign and send it back. So physical presence typically is not a mandatory requirement for contracts to go forward or agreements to go forward. Certainly, when you're doing a site inspection or when you're doing an activity where physical requirement of a person is there, in that case, certainly there would be business losses or delays or lags. But that is something which always happens now and then, and it is nothing new. We've had multiple cases in the past where because of which flights have got delayed either at peak times. So we spoke numbers today. This Indigo crisis was not just an inconvenience, it was economic damage. Over 4,500 flights cancelled, over 8 lakh Indians impacted, and this was not an act of God. This was not weather, this was not war or fuel shock. This was a man-made operational failure by India's largest airline. Refunds and compensations do not settle a national bill of this magnitude. The remaining loss was observed quietly by passengers, by businesses and by states, and ultimately by India's GDP. If private profit is protected while public loss is socialized, we create a moral hazard. And if scale comes without accountability, dominance becomes a liability to the nation. So the question is no longer whether the damage occurred. It did. The question is who pays India back. I thank all my guests for joining us on this discussion. As we brought those numbers, Mitali Nukore, Surjit Panisar, Gautam Mukherjee and Professor Aman Agarwal for joining us and bringing various perspectives into the picture. Now we are moving forward. The demolition drive is beginning against Romeo Lane Club. Officials have confirmed that Romeo Lane Vagator, a popular beachside spot, has been brought down. The structure was sealed earlier in the day after authorities found it was allegedly built on government-owned land. The demolition order comes just days after the tragic fire at Birch by Romeo Lane, the Luthras Club in Arpora. The late-night blaze left 25 people dead and raised serious concerns about fire safety, illegal constructions and how permissions were granted for the nightclub. Joining us on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more on this. Shahid, अभी हम देख रहे हैं कि that club has been brought down. We are getting visuals from Goa, Vagator, जहां पर ये अभी चल रहा है. हमें थोड़ी सी और जानकारी दीजिए इसके बारे में, ये जो कार्रवाई हो रही है.
देखिए, दो तीन चीज़ें इस पूरे मामले में बहुत अहम है। हालांकि पहले ही गोवा सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस मामले में हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले इस मामले में FIR दर्ज हुई, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो है जो इसके मालिक है लुथरा ब्रदर्स के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस के लुकआउट नोटिस जारी करने से पहले ही लुथरा ब्रदर्स जो है वो भाग चुके थे शायद देश छोड़कर। इस मामले में सरकार ने फिर से एक सख्ती बरतते हुए तोड़क कार्रवाई की है और ये तोड़क कार्रवाई बुलडोजर से की जा रही है। बुलडोजर के जरिए इस पूरे क्लब को जो है डेमोलिश किया जा रहा है, जमीन दोज किया जा रहा है। और ये गोवा सरकार ने पहले ही कहा था, क्योंकि यहाँ पे 25 लोगों की जो मौत हुई है वो मौत को लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में देखिए कि जो गोवा सरकार ने रवैया अपनाया है, पहली बार गोवा में ऐसा हुआ है और पहली बार होने के साथ साथ इस क्लब को लेकर 2 बार नोटिस दी गई थी। उसके बाद भी इसे बंद होना चाहिए था, लेकिन ये चालू रहा। इस मामले में देखिए गोवा सरकार ने कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 से 4 अफसरों को जो है 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। संभव है कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन है, क्योंकि लुथरा ब्रदर्स जो थे वो यहाँ से भाग चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि इस बार जो है ये जो 25 लोगों की मौत हुई है, इस मौत के मामले में सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। यही वजह रही है कि वारदात 12 बजे रिकॉर्ड की गई, ये हादसा 12 बजे हुआ और वो 5:30 बजे की फ्लाइट से गोवा चले गए, जबकि उस दौरान इंडिगो को लेकर जो है इशू चल रहा था। लेकिन उनकी फ्लाइट सही समय पर और वो लोग निकल चुके थे यहाँ, जबकि गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। लेकिन जैसे ही जब उन्हें पता चला गोवा पुलिस को कि ये दोनों आरोपी देश छोड़कर जा चुके हैं, तो गोवा पुलिस ने इंटरपोल से कांटेक्ट किया और इसके लिए गोवा पुलिस ने CBI से इस बारे में लेटर लिखकर इन आरोपियों को लेकर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा। CBI ने इस पूरे मामले में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। उसका मकसद ये है कि ये थाईलैंड में अगर है तो वहाँ की जो लोकल एजेंसीज है या जो इंटरपोल की सिस्टर एजेंसीज है, उनके जरिए जो है इन लोगों की जांच, इनकी जानकारी, इनकी तफसील उस एजेंसी तक पहुंचाई जाए जिसको ये तलबगार है, यानी कि गोवा तक जो है ये जानकारी मिले। फिर उसके बाद चूंकि इंटरपोल अगर ये जानकारी CBI और गोवा पुलिस यहाँ तक अगर ये जानकारी आ जाती है, तो फिर इसके बाद इन आरोपियों को जो है प्रत्यार्पण के जो प्रक्रिया है वो पूरी करके इन्हें वापस भारत लाया जाए। क्योंकि 25 लोगों की जो मौत हुई है उस मामले में ये दोनों तो मुख्य आरोपी हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया है और 25 लोगों की मौत हुई, 6 लोग इस मामले में जख्मी हुए। हालांकि गोवा पुलिस अगर समय रहते लुकआउट नोटिस जारी करती तो शायद है कि ये आरोपी भाग नहीं पाते, लेकिन इन्हें भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि 12 बजे वारदात हुई और 5:30 बजे ये लोग फरार हो गए और दूसरे दिन गोवा पुलिस ने इनकी लुकआउट नोटिस जारी की। यानी गोवा पुलिस को जो है ये अंदाजा नहीं था कि ये दोनों आरोपी यहाँ से फरार हो जाएंगे। अब जब ये दोनों यहाँ से फरार होकर थाईलैंड चले गए हैं, वहां जाने के बाद अब ये वहां छुपते छुपते फिर रहे हैं। लेकिन गोवा पुलिस ने CBI को लेटर लिखकर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा। उससे ब्लू कॉर्नर से ये होता है कि कोई भी आरोपी अगर किसी भी देश में छुपा है और वो भारत को जो है तलबगार है, यानी कि भारत से वो भगोड़ा है, तो उसको जो है उसके बारे में पूरी जानकारी संबंधित एजेंसियों को वाया इंटरपोल प्रोवाइड की जाए। तो जब इनकी ब्लू कॉर्नर नोटिस निकली है तो अब जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है, क्योंकि इंटरपोल और CBI की सिस्टर एजेंसीज जो है वो इनके बारे में सारी तफसीलात, सारी जानकारी जो है CBI को देंगे। फिर उसके बाद जो है ये इस पूरे मामले में इन दोनों आरोपियों की प्रत्यार्पण की शर्तें पूरी की जाएंगी और प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जो है भारत लाया जाएगा। आमतौर पर देखिए गोवा में आपको मैं बता दूं कि इस तरह के नाइट क्लब, इस तरह के रेस्टोरेंट, इस तरह के पब, इस तरह के डिस्को बहुत ही खुलेआम और नियम कानून को ताक पर रखकर ये सारी इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की वारदात या हरकतें गोवा में सुनाई नहीं थी। लेकिन इस बार जब हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि गोवा में जो भी हुआ है उसको लेकर गोवा सरकार ने भी कह दिया है कि इस पूरे मामले में हम पूरे गोवा में जो फायर ऑडिट का काम है वो शुरू करेंगे और आज ही उसका ऑर्डर आया है। फायर ऑडिट की प्रक्रिया पूरे गोवा में शुरू की जा रही है। संभव है कि इस फायर ऑडिट करने की वजह से कई ऐसे रेस्टोरेंट, कई ऐसे क्लब, कई ऐसे जो है पब, कई ऐसे होटल्स जो फायर सेफ्टी के उसूलों को नजरअंदाज करते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी।
संभव है कि इस बार गोवा में ये दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना संभव है कि फीका पड़े, क्योंकि इस बार कार्रवाइयां जो 25 लोगों की मौत हुई है, तो इस बार गोवा सरकार की तरफ से भी जो है कार्रवाइयों का सिलसिला बहुत ही सख्त होगा और उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस क्लब में जो भी हुआ है 25 लोगों की मौत के बाद गोवा सरकार ने सख्ती बरतते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला न सिर्फ दर्ज किया बल्कि इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को धड़ाधड़ गिरफ्तार भी किया। अब इस मामले में लुथरा ब्रदर्स को जो है भारत लाना यह गोवा सरकार की सबसे अहम और बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि वो लुथरा ब्रदर्स जो यहाँ से भाग चुके हैं उनको जो है इस मामले में यहाँ लाया जाए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके उनको जो है कटघरे में खड़ा किया जाए। अब चूंकि गोवा में इतनी सारी चीजें हुई है और उसके बाद सत्ताधारी पक्ष को जो है विपक्ष ने घेरने की हर संभव कोशिश की। हालांकि गोवा सरकार के मंत्री जो है उन्होंने साफ कहे, मुख्यमंत्री उन्होंने स्पष्ट कहा है प्रमोद सावंत ने कि हमने जो है ये गोवा में पहली बार हुआ है और उसके बाद भी हम किसी के साथ जो है मुरव्वत नहीं करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। गोवा में ये सब होने के बाद ही महज 2 से 3 दिन में ही फायर ऑडिट का काम शुरू कर लिया गया है। गोवा में कई जगहों पर आज से यह प्रक्रिया शुरू की गई है और आपको मैं बता दूं कि संभव है कि कई सारे जो है ऐसे पब, कई सारे रेस्टोरेंट जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं गोवा में बंद हो जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस बार गोवा में नया साल जो है फीका भी साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ की बात बता दूं, यहाँ पे चूंकि इनको परमिशन थी नहीं तो इन्होंने अंदर कंस्ट्रक्शन से ज्यादा इंटीरियर का जो सहारा लिया वो ज्वलनशील पदार्थ के जरिए लिया, यानी कि घास फूस और लकड़ी का इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया था। जहां पे जब ये एंटरटेनमेंट चल रहा था और वहां पे डांस वगैरह चल रहा था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, उस वीडियो में चलने के बाद आपने देखा कि पीछे भी धुआं नजर आ रहा है। पहले ऐसा लगा कि ये जो है सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर के जरिए ये वारदात हुई है और जो ब्लास्ट हुआ है ये उसी की आवाज है। कई लोग अपने आप को बचाने के लिए और यहां से भाग निकलने के लिए जिस रास्ते का उन्होंने सहारा लिया, यहां पे कोई एग्जिट डोर ही नहीं था, जिसकी वजह से कई लोग धुएं की वजह से, सफोकेशन की वजह से बेहोश होकर घुटन की वजह से गिर पड़े। आग इतनी तेज थी कि जो लोग जमीन पर गिर गए वो उठ ही नहीं पाए और आग बहुत ही कम समय में पूरे होटल को अपनी चपेट में ले ली। जिन लोगों की मौत हुई है उनके 80 से 90% हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। उन लोगों की शिनाख्त भी करना मुश्किल हो गया था। मजबूरन जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने ये कहा कि हम शव की शिनाख्त करने के लिए डीएनए सैंपल का सहारा लेंगे, क्योंकि अगर किसी के परिवार को गलती से भी किसी का शव अगर हैंडओवर किया गया तो वो भी एक इशू हो जाएगा। इसलिए इन सब से बचने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि हम इस मामले में जो है डीएनए सैंपल लेंगे और उसके बाद उनके परिजनों को उनके हवाले करेंगे। बहरहाल जिनके शव की शिनाख्त पहले हुई उनके पहले ही जो है उनके परिवार को दे दिया गया है, जबकि आपको मैं बता दूं कि अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ एडमिट है जो जख्मों से 2-4 हैं। चूंकि 60 से 70% हिस्सा उनका जल चुका है, इसलिए उनका ठीक होना भी जो है एक समय लगेगा। उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है। अब बची है कानूनी प्रक्रिया। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो गोवा के इस क्लब में पहले से ही जो है आपको मैं बताऊं कि 2 नोटिस जारी की गई थी। उसके बावजूद भी ये सब कुछ जो है ताक पर रखा गया। सारे नियम कायदों को जो है जमीन पर रखकर ये सारे इस तरह के क्लब, सिर्फ यही नहीं है, गोवा में ऐसे सैकड़ों हजारों क्लब, पब, रेस्टोरेंट हैं जो नियम और कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी ही बेफिक्री से ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीने में धड़ल्ले से चलाए जाते हैं और मोटी कमाई करते हैं। जबकि इसी दौरान देखिए विपक्ष ने यह भी कहा है कि गोवा में इस तरह से जो होना बहुत ही आम बात है। नियम कानून कायदों को ताक पर रखना यह बहुत आम सी बात है। विपक्ष ने तो यह तक भी कहा है कि यह क्लब कार्रवाई तो होगी और कुछ दिन बाद शुरू भी हो जाएगा। बहरहाल पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने सुना होगा कि गोवा में बुलडोजर चला, क्योंकि 25 लोगों की जो मौत है कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से गिरती नजर आ रही थी। जी बिल्कुल शाहिद, जब आप उन 25 इनोसेंट लाइव्स की बात करते हैं, ये जो कार्रवाई आज हम देख रहे हैं, जिसकी विजुअल्स आज हमारे पास वैगाटोर से आ रही है, वहाँ पर आज तो रेस्टोरेंट को डिमोलिश कर दिया गया, बट ये सब हुआ जब हमने 25 जानें खो चुकी थे हम। शाहिद जी बिल्कुल, देखिए ये जो चीज आज की जा रही है, ये एक कहावत है कि घोड़ा तबेले से चला गया तो तबेले में ताला क्या लगाना। बिल्कुल वही हुआ है। जब 2 नोटिस आई और जब यहाँ पे ये कहा गया कि ये कार्रवाई, विपक्ष ने कहा ये बात कि जब इनलीगल था, सब कुछ था, 2 नोटिस जारी हो गई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर ये कार्रवाई उस वक्त होती तो संभव है कि आज 25 लोगों की जानें बच जाती।
अब हुआ यह है कि 25 लोगों की जो जाने गई, तो जाहिर सी बात है कि गोवा सरकार की जो है जवाबदेही हो गई। विपक्ष ने तो सरकार मुख्यमंत्री को कहा कि इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। और आप देखिए कि 25 लोगों की जो जान गई किस लिए गई, क्योंकि उसे परमिशन नहीं था कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद भी उसने किया। उसे दूसरी एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था, फिर भी उसने वो चला रहा था। और उसके बाद आप देखिए कि मामला जैसे ही दर्ज हुआ, मामला जैसे हुआ, रात 11-12 बजे के बीच में ये हादसा पेश आया है। 5:30 बजे की फ्लाइट से लुथरा ब्रदर्स जो है यहाँ से बाहर निकल चुके थे। इसका मतलब ये होता है कि शाहिद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी जानकारी हमें दी। That's it from this bulletin. We are slipping into a short break. मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। Parliament debates Vande Mataram. The missing stanzas spark fierce war. The 1937 version adopted by Congress. A song written for Indian nationalism. What stanzas were cut in 1937 and why? Hello and welcome to this important episode of Explained by Newsx with me, Uday Pratap Singh. A 10-hour debate raged in Parliament on the 150th anniversary of Vande Mataram, with the Prime Minister questioning as to why the national song was butchered despite it being a symbol of unity and hope for Indians during the British Raj. The Prime Minister went to read missing stanzas in Parliament. Which stanzas did the Prime Minister omit? Well, we'll tell you more about that, but first let's go back in history to tell you what happened 150 years ago. The song was written and composed by Bankim Chandra Chatterjee in 1875 and first published in the literary journal Bangadarshan. It's generally believed that the concept for Vande Mataram came to Bankim Chandra Chatterjee while he was still working as a government official. Around the same time, the administration was trying to promote God Save the King as the anthem for Indian subjects, which Indian nationalists disliked. Bankim Chandra Chatterjee later included the song in his 1882 book Anand Mat, set in the same events of the Sannyasi rebellion, the first major anti-British independence struggle in India. The colonial government went on to ban the book and make the recital of the song in public a crime. Born in June 1838 to an orthodox Bengali family in Nehati, Bengal Presidency, Bankim Chandra Chattopadhyay was a key figure in literary renaissance of Bengal as well as the broader Indian subcontinent. The author held a degree in arts as well as law. Before joining the subordinate executive service, he also went on to become deputy magistrate and deputy collector before retiring from government service in 1891 when he received the title of Rai Bahadur. The nationalist author penned 14 novels and many serious serocomic, satirical, scientific and critical treatises in Bengal. In fact, he is known as Sahitya Samrat or the Emperor of Literature in Bengali.
The depth of his influence can be felt if you take a look at his contributions to the Indian freedom struggle, as well as his role in creating nationalist symbols that are used to this day, such as the image of Bharat Mata, Vande Mataram, the hymn to the motherland, Anandamat, the novel that inspired generations of freedom fighters, as well as his reinterpretation of the Bhagavad Gita that strongly influenced nationalism. Vande Mataram, in fact, became such an important part of the freedom struggle that it was adopted by the Republic of India as its national song in 1950. First gaining political significance after being recited by Nobel laureate Rabindranath Tagore at the Calcutta Congress session in 1896. The song became popular amongst political activists and freedom fighters as a marching song by 1905. Composed in Sanskritized Bengali during a spontaneous session by Bankim Chandra, musician and composer Jadunath Bhattacharya was asked to set a tune for this poem just after it was written. The first translation of Bankim Chandra Chattopadhyay's novel Anandamat, including the poem Vande Mataram, into English by Naresh Chandra Sen Gupta. The poem is an ode to the motherland, personified as a mother goddess. Literally translating to I bow to thee, mother. Let's first take you through the meaning behind the first two stanzas of the poem that were later adopted as India's national song. The first two verses of the song go as follows. Mother, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with the winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free, glory of moonlight dreams over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, mother, giver of ease, laughing low and sweet. Mother, I kiss thy feet, speaker sweet and low. Mother, to thee I bow, who hath said thou art weak in thy lands. When the swords flash out in 70 million hands and 70 million voices roar thy dreadful name from shore to shore. With many strengths, who art mighty and strong, to thee I call Mother and Lord. Thou who savest it, arise and save. To her I cry, whoever her foemen drove back from plain and sea and shook herself free. The sheer emotion evoked by these lines may provide some insight into why it became one of the most popular songs of protest during the Indian independence movement. Although the recital of the song was banned by the colonial government, many activists were imprisoned by the colonial government for disobeying the order. However, that did not deter workers and general public from repeatedly violating the ban, many times by gathering together in the presence of colonial officials and singing it. Popularized by Rabindranath Tagore, who recited it at the Calcutta Congress session held at Beaton Square in 1896, the song went on to be adopted and popularized by many prominent figures. Apart from Tagore, Dakshina Charan Sen sang it 5 years later in 1901 at another session of the Congress at Calcutta. Poet Sarla Devi Chaudarangi also sang the song in the Banaras Congress sessions in 1905. Lala Lajpat Rai, another hero of the Indian freedom struggle, started a journal called Vande Mataram from Lahore. Hiralal Sen made India's first political film in 1905, which ended with a popular chant. Indian revolutionary Mang Tangini Hazra's last words as she was shot to death by the Crown Police were Vande Mataram. In 1907, when Bhikaji Cama created the first version of India's national flag, it had Vande Mataram written on it in the middle band. Looking at the way the song was intertwined into the Indian freedom struggle, not just by a few but by seeping into the nation's consciousness, one cannot help but wonder why the song did not become India's national anthem. Mahatma Gandhi supported the adoption and singing of the Vande Mataram song and said in a speech given in Guwahati, Assam in 1946, that Jai Hind should not replace Vande Mataram. Gandhi reminded everyone present that Vande Mataram was being sung since the inception of the Congress. He supported the Jai Hind greeting but stated that it should not mean the exclusion of Vande Mataram. The Mahatma was concerned that those who discarded Vande Mataram, given the tradition of sacrifice behind it, would one day discard Jai Hind also. However, controversy over the song soon emerged. From the outset, some sections of the Muslim community objected to the song, viewing its portrayal of India as Hindu goddesses as idolatrous and incompatible, in fact, with Islamic monotheism. Leaders like Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League argued that it promoted Hindu nationalism over a secular ideal. These objections peaked in the 1930s during the push for independence. In 1937, parts of the Vande Mataram, which was chosen as the national song in 1937 by the Indian National Congress as it pursued the independence of India from colonial rule. A committee consisting of Maulana Azad, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Acharya Dev and Rabindranath Tagore recommended the adoption. However, keeping in mind the objections being raised, the song was adopted with a compromise. According to the gathered leaders, including Nobel laureate Rabindranath Tagore, though the first two stanzas began with an unexceptional
evocation of beauty and motherland. In later stanzas, there are references to the Hindu goddess Durga. Thereafter, with the support of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress decided to adopt only the first two stanzas as the national song to be sung at public gatherings, and other verses that included references to Durga and Lakshmi were expunged. Today, the Prime Minister recited the omitted stanzas of the iconic verses removed in 1937 to highlight their historical significance and the spirit of the original compensation. Let's listen into the stanzas read out by him, the rebuttal then given by Priyanka Gandhi Vadra in Parliament, and then we will decode its literal translation. वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें, और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। So what was in the stanzas that were read out by the Prime Minister? The deleted stanzas read as follows: Thou art wisdom, thou art law, thou art our heart, our soul, our breath. Thou the love divine, the awe in our hearts that conquers death. Thine the strength that nerves the arm, thine the beauty, thine the charm. Every image made divine in our temples is but thine. Thou art Durga, lady and queen, with her hands that strike and her swords of sheen. Thou art Lakshmi, lotus-throned, and the muse 100-toned. In a letter to Muhammad Ali Jinnah, Nehru elaborated on the committee's decision to remove the above stanzas. Nehru stated, first of all, it has to be remembered that no formal national anthem has been adopted by the Congress at any time. It's true, however, that the Vande Mataram song has been intimately associated with Indian nationalism for more than 30 years, and numerous associations of sentiment and sacrifice have gathered round it. Quote unquote. Nehru went on to say, when some objections were raised, the working committee considered the matter and decided that certain stanzas which contained certain allegorical references might not be used on nation platform or occasions. The two stanzas that have been recommended by the working committee for use as a national song have not a word or a phrase which can offend anybody from any point of view, and I am surprised that anyone can object to them. They may appeal to some more than to others, some may prefer another national song, and they have full freedom to do so. When India gained independence in 1947, the country needed national symbols. The stanzas making reference to Goddess Durga and Goddess Lakshmi led to a fierce debate in the Constituent Assembly. While some argued that Vande Mataram had earned the right through its role in the freedom movement, others felt that Jana Gana Man, written by Rabindranath Tagore in 1911, was more inclusive and universal. Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister, reportedly supported the adoption of Jana Gana Man as the national anthem, saying India's anthem must unite, not divide. Finally, on January 24, 1950, just 2 days before India became a republic, the Constituent Assembly, under Dr. Rajendra Prasad's presidency, formally adopted Vande Mataram as the national song of India. Dr. Rajendra Prasad asserted during the session, the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Man and shall have equal status with it. In recent years, Vande Mataram has occasionally resurfaced in political discourse, debated over issues of nationalism, identity and secularism. However, from the dusty lanes of colonial Bengal to the global stage of independent India, Vande Mataram continues to remain a symbol of sacrifice, courage, as well as unity. As we mark the 150th anniversary of Vande Mataram in 2025, the debate still continues. The Prime Minister has raised a pointed question: why was this symbol of unity and hope during British rule removed? The Congress fired back, asserting its role in declaring Vande Mataram national song of India.
The argument revolves around secularism versus nationalism. But the real question is, do we let our past define us or learn from it to shape our evolving future? Well, we leave you with a thought to ponder over. Parliament debates Vande Mataram. The missing stanzas spark fierce war. The 1937 version adopted by Congress. A song written for Indian nationalism. What stanzas were cut in 1937 and why? In fact, joining us now is Sajal Chatterjee, great-grandson of Bankim Chandra Chatterjee, to discuss the 150-year anniversary of the Vande Mataram in further details and this debate in Parliament on it as well. Thank you for being with us. What stories have you heard about your great-grandfather? Why did he write the Vande Mataram? Mr. Chatterjee. देखिए, वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है, ये तो सब जानते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, पूरा भारत भी जानते हैं, ये राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम जब पार्लियामेंट में गया, उस टाइम तो जनगण मन भी गया था, जनगण मन को नेशनल एंथम कर दिया गया, ठीक है। तो इसको जब पार्लियामेंट में दिया गया, उस समय सर जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के बात सुन के इसको बैंड कर दिया गया। जिन्ना ने बोला कि इसमें ये पूरा गाना है, इसके अंदर हिंदू का जो देवताओं है सबका नाम है, इसको बंद करना चाहिए। तब बंद हो गया था, इसीलिए पूरा हो नहीं रहा था। तो दो स्टेंजरा होता था जहां तक हिंदू देव देवी का नाम नहीं है। और वंदे मातरम तो लिखा हुआ था हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर है उन लोगों के लिए लिखा था। What is that one thing about your great grandfather that the young generation of India should know, Sajal? देखिए, एक्चुअली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत का पहला ग्रेजुएट है जी। सबसे बड़ा बात यही है। दूसरा बात है, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नौकरी करते थे मेरा दादाजी, उस समय ब्रिटिश को भी दबा के रखे थे, इसीलिए ब्रिटिश कोई जगह में उसको 1-2 साल के ज्यादा रखता नहीं था। आदमी लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको नौकरी से निकाल दिया, लेकिन निकला नहीं, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था। ब्रिटिश का जो ये बांग्ला में तो बात है ताबेदारी, ब्रिटिश के अंडर वो काम नहीं करेंगे, ब्रिटिश का बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए नौकरी छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ के बैठ गया था। और देश का ये बात जानना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को ये बात इसीलिए जानना चाहिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को जानना जरूरी है, ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी जानना जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई जान नहीं पाते हैं। वो तो बांग्ला भाषा का एक तो समुंदर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उसको तो जानना चाहिए, जिसको बांग्ला भाषा का गुरु कहते थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप लोग शायद जानते नहीं है, जो 5 नंबर प्रताप चैटर्जी स्ट्रीट कलकत्ता में है, जिस बासभवन में बंकिम बाबू का देहांत हुआ, वो भवन में रविंद्रनाथ टैगोर कोई भी किताब लिखते थे, कोई भी कुछ भी लिखते थे कि एक बार जाके मेरा दादाजी के पास दिखाते थे, बंकिम बाबू के पास आते थे, बंकिम बाबू देख के उसको सर्टिफाई करते थे। ये कोई वो बहुत आदमी नहीं जानते हैं, जो पढ़ाई लिखाई किया है बंकिम को लेके वो लोग जानते हैं, जो लोग रिसर्च किया वो लोग जानते हैं। तो देखिए, इसी वास्ते तो बंकिम बाबू को नेक्स्ट जनरेशन जितना दिन दुनिया रहेगा उतना दिन बंकिम बाबू को भी रहना चाहिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, जैसे विद्यासागर है, तो रहना चाहिए। And how does it make you feel when the Prime Minister, Sajal, himself makes an effort to educate people about Bankim Chatterjee's contributions? जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर बोलते हैं देशवासियों को। प्राउड हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले होना चाहिए था वो अभी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो किए हैं उसको मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एकदम नमन कर रहा हूँ, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, उसको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलने का भाषा नहीं है, प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। आज प्रधानमंत्री साहब ने जो किए हैं वो तो पहले ही होना चाहिए था, ये हुआ क्यों नहीं, ये तो मेरा प्रश्न है, ये तो मेरा क्वेश्चन है। आज मोदी जी ने जो किया है तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये तो हक है, बंगाली जाति का हक है, हिंदू का हक है, एक्चुअली भारतीय हर आदमी का हक है बंकिम को जानना, बंकिम को पढ़ना,
बंकिम को लेकर रिसर्च करना, बंकिम क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, इसको तो जानना चाहिए। वंदे मातरम क्या है, उसके अंदर लिखा क्या है, ये पूछने का कोई दरकार नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने जो किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो किया, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं मेरे तरफ से और मेरे पर वो लोग जो कहते हैं कि एक धार्मिक गीत है, द वंस हु से इट्स अ रिलीजियस सॉन्ग, उनको क्या कहेंगे आप? जो लोग कहते हैं वो लोग पॉलिटिकली कहते हैं, कोई आम जनता इसे नहीं कह सकते। एक ठो कास्ट है, वही कास्ट के लिए जो जिन लोगों का माथा खराब हो जा रहा है, वो कास्ट के लिए जिन लोगों का माथा खराब हो जा रहा है, वही लोग बोलेंगे, दूसरा कोई लोग नहीं बोलेंगे। ये तो एक ही तो कास्ट है जिन्होंने नहीं चाहता कि ये वंदे मातरम गाना हो, वंदे मातरम पूरा जो है, पूरा स्टेंजा जो है वो पार्लियामेंट में बोला जाए। जो एक ही तो कष्ट है, और वो कष्ट को जो लोग प्रायोरिटी देता है वो लोग ही चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। Do you believe we've done great disservice to Bankim ji through these controversies over Vande Mataram? क्या आपको लगता है ये गलत है? जरूर है, ये तो कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए जी। अरे भारत तो पहले तो हिंदू लोगों का देश है। हम लोग बोलते हैं हम भारतीय हो, हम लोग हिंदुत्ववाद है, हम लोग जातीयतावाद है, बाद में तो सेकुलरिज्म है, ठीक है, वो छोड़िए, लेकिन हिंदुत्व जो है, भारत को जो लोगों ने स्वाधीन किया है, तो उन लोगों का भाषा है। आज जिन लोगों के चलते हम लोग चलते फिरते हैं, बात करते हैं, घूमते फिरते हैं, ये तो उन लोगों की भाषा है। ये भाषा तो भारतीय का हर आम आदमी का मन में घुसना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, कोई भी कास्ट का हो। जो लोग पॉलिटिक्स करता है वही लोग ही इसको लेके पॉलिटिक्स करता है, ये गाने के लोग पॉलिटिक्स करता है। वो लोग चाहते हैं कि वो कास्ट अगर हमारे अगेंस्ट चला जाए तो हम लोगों को दिक्कत होगा। जो लोग चाहते हैं कि जे एक कास्ट अगेंस्ट जाने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, वो लोग इसको सामने ले आए। How should we end the confusion and politics over Vande Mataram, सचल? 150 साल बीत गए हैं इस गीत को लिखे हुए, मगर अभी भी विवाद जो है वो जारी रहता है। You know, this must end so that the patriotic thought behind the song is known to every individual in India. सचल, ये कन्फ्यूजन खत्म करने का एक ही रास्ता है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यही है, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंडिया का पहला ग्रेजुएट है। ये बहुत आदमी लोग नहीं जानते हैं कि पहला ग्रेजुएट कौन है इंडिया का। तो अगर वंदे मातरम को, बंकिम चंद्र को जिंदा रखना है, इसको बंगाली समाज में, भारतीय के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर इसको जिंदा रखना है, तो इसके 2-3 तो रास्ता है। देखिए, हम 2 गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बंगाल गवर्नमेंट। पहला ग्रेजुएट जो है, उनके नाम पे कहीं भी, इंडिया का कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बंकिम यूनिवर्सिटी एक तो होना चाहिए। हम आपके चैनल के थ्रू सबको बोलना चाहते हैं कि बंकिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जैसे रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जैसे विद्यासागर यूनिवर्सिटी है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इतना छोटा मोटा आदमी तो नहीं थे जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। दूसरा बात यही है, बंगाल को हर जगह में रविंद्र भवन है, जहां कल्चरल प्रोग्राम होता है, पॉलिटिकल शो होता है, बहुत कुछ होता है। और रविंद्र भवन जैसे सब जगह में है, ऐसे बंकिम भवन भी होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेरा विनती है, बंगाल गवर्नमेंट से भी मेरा विनती है। अभी तक बंगाल गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, बंकिम को लेके कुछ नहीं किया। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, वो तो मैं बोलने का कुछ भाषा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लीडर जब कलकत्ता आते हैं, बंगाल आते हैं, जैसे स्टेट, इधर का स्टेट प्रेसिडेंट को हमारा खबर तो रखती है, छोड़िए, हमारा परिवार का खबर लेते हैं। 2018 में शायद, साल ठीक याद नहीं है, अमित शाह जी आए थे कलकत्ता जी। उन्होंने हमको बुला के अपने पास लेके हमको सम्मानित किया, मंच पे खड़ा करके, आपका बिरला सभागार में। हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारा परिवार का हालचाल क्या है, पूरा पूछे है अमित शाह जी ने।
हमरा गर्व होता है ये बात सोच के, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना दूर से आते हुए भी हम लोग खबर रखते हैं, खबर लेते हैं, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट हमारा अपना गवर्नमेंट है, हमारा अपना बंगला का है, हम लोगों का कोई खबर तो नहीं लेता है। जैसे बंकिम बाबू भी नेग्लेक्टेड थे, ऐसे मेरा परिवार भी नेग्लेक्टेड है। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किए हैं, आज जो बात बोले हैं पार्लियामेंट में, उसका पूरा होना चाहिए। हम चाहें वो पूरा हो। एवं जैसे आपका जनो गनो मोनो पार्लियामेंट शुरू होने का पहले होता है वोकली, और लास्ट में होता है वंदे मातरम इंस्ट्रूमेंटली, तो हम चाहते हैं कि पूरा गाना वोकली बाजे पार्लियामेंट में, या देश के कोने कोने जहां वंदे मातरम बाजे पूरा गाना ही बाजे। ये मैं प्रधानमंत्री से विनती है, उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है, सही किया है। मेरे परिवार की तरफ से और एक बार सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और मोदी जी के लिए मेरा प्रणाम। शुक्रिया सजल चैटर्जी हमारे संग जुड़ने के लिए, with your perspective of course on your ancestors. On your screens now you can see the franchise of Romeo Lane, which has restaurants in various cities of India and has been expanding and rising ever since it started. The man on the right is one of the co-owners of this mega franchise called Romeo Lane. His name is Saurabh Luthra, and today we will take a deeper look at the two co-owners of this company. Hello and welcome to another episode of Deep Dive brought to you by Newsx. I'm Uday Pratap Singh. Saurabh Luthra and Gaurav Luthra are the two brothers who own the franchise of Romeo Lane. These restaurants are up and running in many parts of this country. There are about 60 locations, and let's now break it down. The Romeo Lane franchise is open under different names in many places, starting of course from Delhi and breaking it down even further. It's operational in civil lines, Noida, Greater Noida, Shalimar Bagh, Gurugram, Rohini and more just in Delhi. Going further, it's also open in Agra, Meerut, Dehradun, Karnal, Raipur, Goa, of course Patna, Lucknow, Zirakpur, Nagpur, Mohali as well as Kanpur. The franchise was also in the process of being opened in Bhopal, Mathura as well as more. The Romeo Lane Hospitality recently opened its doors in Dubai as well. Now the massive fire which reduced the upscale Birch by Romeo Lane nightclub in Goa's Arpora to ashes was a moment of irreparable sorrow and overwhelming distress. In the words of Saurabh Luthra himself, the blaze killed 25 people, 20 staff members and 5 tourists and injured 6 others. Luthra on Monday had said the nightclub's management was deeply shaken by the scale of the loss. The management expressed profound grief and is deeply shaken by the tragic loss of lives resulting from the unfortunate incident at Birch. He said in a statement posted on Instagram. Well, Saurabh Luthra is a gold medalist engineer who turned into a promising and fastest growing restaurateur with so many outlets of his franchise open and growing. He's previously also been featured on Forbes India and is listed as the chairman of Romeo Lane. On the Forbes article, he's been named to redefine India's hospitality landscape with vision as well as velocity. Forbes gave this award to him because they classified him as a restaurateur who took a creative eye paired with an iron will to build a hospitality brand that resonates across cultures and cities. Saurabh and Gaurav Luthra are brothers and the co-owners of this franchise Romeo Lane. They've opened multiple clubs and restaurants under different names, even though several of their outlets have been shut down over the years. Saurabh and Gaurav were reportedly set to launch another club in the next coming days in Gaur city of Noida. So far, though, their Goa club was considered their largest and most successful venture until this catastrophic fire destroyed it. Well, Saurabh also reportedly owns a residential property in Dubai. He's also posted some hints on his social media page on Instagram about opening the next franchise in London as well. In a mere 6 years, ever since the two brothers opened their first outlet in Civil Lines, Delhi, they've opened about 60 outlets of their Romeo Lane franchise, and until a few days ago, they were in the process of expanding even further and opening many more. Not just this, but they also opened another outlet in Goa itself called Kaha by Romeo Lane, which is in Anjuna, Goa, and Kaha is also opened in Dehradun as well. Kaha is called in fact as a cafe and bar. The duo Gaurav and Saurabh opened as many as 60 outlets in a span of the last 6 years. Ever since their first in Delhi, this boom in business augmented their network. Over the years, they have been spotted with many famous restaurateurs with similar successful chains. Apart from this, they've also been clicked with other high-profile names in the entertainment industry, such as Vicky Kaushal, Jacqueline Fernandez and Ori.
This only goes to show how far their networking was and the connections they built along the way, allowing them to expand their space in this industry. The duo has also been recognized a lot over the past few years with many accolades for their stride in hospitality. They won the Times Hospitality Awards for iconic nightlife chain in Delhi, iconic resto bar with terrace. They've also received an award from Times of India for best nightclub, as well as Times Hospitality Icons awarded them with an iconic nightlife chain award, which his brother Gaurav was there to collect. Both brothers' mobile phones are now switched off, and police are tracking their possible digital movements through social media trails as well as other electronic identifiers. The brothers are now facing an FIR under multiple sections of the Bharatiya Nyaya Sahita. In fact, Indian authorities have confirmed that the two brothers Saurabh and Gaurav Luthra boarded a flight to Phuket in Thailand shortly after the incident. This is the latest photograph that has surfaced of Saurabh from Thailand. ML Sharma, former Special Director CBI, is joining us now on the broadcast. ML Sharma, what do you make of the background of these two brothers, the co-owners of the restaurant club in Goa, which burned down and led to the death of multiple people? What do you make of their background, their connections, and of course their role of conspiracy in this crime? The background has already been mentioned by you. Their rise has been very quick, and they seem to have acquired a lot of influence by hobnobbing with powerful people. But as far as crime is concerned, most dastardly, resulting in the death of 25 innocent people, including entire family from Delhi. But they are very foolish to have absconded from the country. They should have remained in the country and surrendered before the authorities and faced the consequences. Because I am very clear that their escape is not going to last long. Whatever country they are, of course, now the papers say that they have flown to Thailand, and maybe from there they migrate to another country, but they're too well known. The photographs have appeared in the newspapers. In any case, such incidents take place elsewhere also, but and therefore all countries cooperate in these matters. In any case, with Thailand, if they are there, and I hope they are there, our relations are very good, and soon we'll seek the extradition, or maybe the government deports them back to India. So the most important aspect about this case is that they were running outfit without any license. You see, even in licensed clubs, things happen. Not only in India, but they happen abroad also. But it was totally unlicensed. And my information is that the local police station, that is Anjuna police station, had issued notice to them, but because of the influence with the senior police officers, they ignored that notice and continued with their so-called business activity. And of course, since it was unlicensed club, no fire norms are followed. I want to tell your viewers that there's a building code formulated by the central government. Now, building code also provides for fire safety. Fire safety means the places where fire hydrants will be placed, fire extinguishers will be placed, escape routes, and so on and so forth. Nothing was there in this. Okay. And Mr. Sharma, do you believe the fact that, they fled in this manner does expose their guilt in a manner? And also big questions as to how they were allowed to leave the country. See, the time was too short. The police, as per news reports, got information at about midnight, and they were clever. From there, they flew to Delhi, and from Delhi they took a flight to their present destination. So, police can't be blamed for their escape because they're too clever. But police certainly has to be blamed for what happened. All right, ML Sharma, appreciate you joining us with your perspective on that story. On the rise, so lay out some
डबल इंजन का ये मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। I don't see any physical status here. They are not showing anything and they are not telling anything about the flight. The marriage is on, but the bride has to reach there. This flight is also cancelled and today one of my friend's daughter marriage is there. अच्छी नहीं है ना, किसी पब्लिक को परेशान करना, कुछ तो अपना करना चाहिए, कुछ रास्ता बनाना चाहिए। दिस इज वेरी रिडिकुलस, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी, उन एंकर Hello and welcome to another episode of Newsx Deep Dive with me, Uday Pratap Singh. Today we are once again turning our attention to the heartbreaking tragedy in Goa's Arpura that led to 25 people losing their lives. The fire at the nightclub Birch by Romeo Lane has raised many questions as more and more details and videos of the incident have come out. What led to the massive blaze? How did 25 people lose their lives in the tragedy? Why was there no escape for those inside? This is what we're looking into today. On your screens is a video taken moments before the fire started. You can see a band putting on a performance with people heard celebrating and enjoying their time at the club. Mere moments later, you can see sparks begin to fly overhead. The fire is seen blooming slowly from the roof. Slowly the fire spreads, with the roof giving way as sparks fall on the stage below. As sparks begin falling from the roof, we see a band member turning his head as he notices the flames. As other members on the stage also notice the growing blaze, we see the band members moving away while those attending the club begin to raise an alarm. The commotion causes the dancer to turn around and notice the fire as the stage rapidly empties. The band members and those behind the DJ console quickly vacate the stage. Another man who seems to be with the performers is then seen throwing water from a bottle in an attempt to douse the blaze. In the background, we hear panic building amongst the club goers. As people move away from the spot, thick smoke billows into the room from the spot of the fire, quickly filling this enclosed space. People move in to quickly remove instruments and other objects from the stage as the smoke and fire accelerate. A video recorded sometime before the fire was seen breaking out. In fact, shows fireworks on the stage operating during the performance. Sparks from the display are seen touching the lights and the wooden roof of the club. The video gains prominence once we take into account statements made by eyewitnesses to the tragedy. One of the tourists who survived the incident claimed that the fireworks set off during a live performance triggered the blaze. Goa CM Pramod Sawant also revealed that preliminary inquiry into the tragedy suggests that electric firecrackers that were set off inside the premises sparked the blaze. During the video showing the moment the fire started, a person in the background can also be heard saying, "You guys have set off a fire."
So what were these fireworks that may be the reason behind the tragedy? Well, known as stage pyrotechnics, they are often used in live performances and concerts, creating dramatic effects such as bursting of flames, sparks and smoke. Known as concussions, the apparatus on stage is a popular effect used by performers. While Birch used the same apparatus as many, it failed to take into account the very basics of indoor firework safety, which first and foremost demand a proper location that is away from flammable items. In the videos from Birch, we can see how the bursts of sparks brushed the nightclub's thatched roof as well as the electric stage lights installed on the roof. The apparent lack of fire safety norms becomes glaringly obvious. But what truly raises questions is that once the blaze was noticed and sparked panic, causing people to flee, how did it claim 25 lives? Why were people unable to run and save their lives? Well, even if people had been able to make their way out in time, the club's lack of exit points and narrow lanes made it difficult to expedite the process.